Hello everyone, good evening. Welcome to this session. Hi Rakesh, hello Suraj, hi Komal, hello Shayan. Good evening, welcome to this session guys. आज जल्दी जल्दी शुरू करेंगे. So today we are going through the fourth part of innovation and entrepreneurship where we'll have only few questions with respect to startup. थोड़ा ज़्यादा लंबा करना चाहती थी but due to some conditions I'll have to wind up early. So that doesn't mean that I will not explain the questions nicely. I'll keep lesser number of questions. तो जल्दी जल्दी से फटाफट आज हम लोग कम questions करेंगे, like say around 10-11 questions करेंगे. So we'll try to keep the video smaller as in how much required. Okay, so be ready and let's get started. So here comes the first question on your screen. Okay. Hello Kashish, good evening, welcome to the session. How are you? This is a question on lean startup. So if you have any idea about lean startup, please feel free to put it forward in the chat. And if you don't know, then make a guess so that we can discuss about that. Hi Sampath, good evening, welcome to the session. Alright, so here we have Rakesh, okay, one answer. Komal. Guys, a quick check for you people. If you haven't liked this session yet, do like it as well. Alright, let's get started with the answer of the question. I'll wait for another 10 seconds and then I'll get started with lean startup. Lean startup क्या होता है हम थोड़ा डिटेल में पता करेंगे. Some C's and some B's. Okay. Okay. Hi Suraj. Okay, Suraj has given us an answer. Fine, good. And I think you guys are done. Yes. Okay. So what is MPV, minimum viable product? That's my answer. So what is it all talking about? Let's check and find out and understand what is the intention behind it. So writing a detailed business plan or operating in stealth means छुप कर operate करना and release the fully functional prototype later is not lean startup. Rather टेस्टिंग दी हाइपोथेसिस, मतलब आप ओपनली टेस्ट करो. सपोज मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया और उसमें मैंने पहला फंक्शन बनाया कि यूजर कैसे लॉग इन कर सकता है, तो इस चीज के हाइपोथेसिस को मैं टेस्ट करवाऊंगी ओपनली. ओके, सिमिलरली डिस्कवरिंग द अर्ली अडॉप्टिंग कस्टमर्स, कि कौन ऐसे कस्टमर्स है जो नई चीजें अडॉप्ट करने वाले इंटरेस्टेड हैं, उनको जाकर मैं अपने प्रोडक्ट्स दिखाऊंगी. हाय आकाश, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन. एंड देन आई विल रिलीज द MVP, which is the minimum viable product. Now in detail if we talk about it, let's understand in a bit more. Okay, lean startup is a method to fund a new company. Hi Ishwara, welcome. Okay, और इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट ऑन बिहाफ ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. ठीक है, जैसे मेरी एक बहुत बड़ी मल्टी चेन कंपनी है एंड मैं उसमें से कोई नया प्रोडक्ट लेकर आ रही हूँ या एनीथिंग एज सच, आई वुड गो विद अ लीन स्टार्टअप टेक्नोलॉजी वेर आई एम जस्ट लॉन्चिंग एंड इंट्रोड्यूसिंग माई प्रोडक्ट और माई न्यू कंपनी टू यू पीपल. हाई रेणुका, हेलो शिवम, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन गाइज. ऑलराइट, सो ओवर हियर कमिंग बैक, वी डेमोन्स्ट्रेटेड द डिजायर. I was here. The lean startup method advocates developing products that consumers have already demonstrated they desire, so the market is already existing as soon as the product is launched. और ये कब होगा? जब आप लोगों को एक प्रोटोटाइप दिखाओगे. फॉर एग्जाम्पल, किसी को नहीं पता कि मैं एक ऐसा पेन बना रही हूँ जो, सपोज करो कि मैं मुड़ने वाला पेन बना रही हूँ, आई कैन फोल्ड द पेन. ओके, until and unless before releasing the product in the market, I'll have to create that craze कि मैं लोगों को samples दिखाऊंगी कि कैसे, by bending this pen I can keep it in a small pocket, by bending this pen I can make it look fascinating and stylish, things like that. That's lean startup. And there are 5 main principles which you can make a note of. Number 1, that entrepreneurs are everywhere. Lean startup always works on the principle of entrepreneurs being everywhere. वो ये जानते हैं कि अगर आज competitors नहीं हैं तो कल जरूर आएंगे, तो उस हिसाब से वो सारी चीजें plan out करते हैं. Similarly, entrepreneurship is a management. Basically, you manage yourself, you manage the team, you manage the workforce, and you also manage the product. Validated learning, whatever you learn you will always try to validate it कि ये सही है या गलत, ये हमारे पर्पस को फुलफिल कर रहा है या नहीं.
And likewise, innovation accounting is really taken into consideration when you are doing a lean startup, when you are introducing a new product. And lastly, build, measure, learn. ये प्रोटोटाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले प्रोडक्ट बनाइए, मेजर कीजिए कि वो किस हद तक और कस्टमर्स के डिमांड्स को पूरा कर रहा है, एंड लर्न फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग. अगर कुछ अच्छा कर रहे हो तो पॉजिटिव फीडबैक्स पर काम कीजिए एंड उन्हें और बेटर बनाइए, एंड अगर नेगेटिव फीडबैक्स मिल रहे हैं तो उन पे ऑब्वियसली उन पे इम्प्रूव कीजिए. ओके, सो दैट ब्रिंग्स अस टू द सेकंड क्वेश्चन फॉर द डे. What is the primary task of a startup? And I want everyone to quickly answer in the chat. You won't get lot of time. You should not spend lot of time, I should say that, in these type of questions. Okay, so the people who are joining in the session right now, request to all of you to quickly answer this question. Hi Shauna, good evening. Hey Shubham. Okay, we have so many D's. All. Okay, are you sure? Primary task. Hi Kamlesh, good evening, welcome to the session. Hello Buddhaditya, good evening, welcome to the session. इतने सारे D देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, because you know why. I'll tell you. आकाश ने कुछ डिफरेंट आंसर दिया है C, सूरज ने भी कुछ डिफरेंट आंसर दिया है B. Let's see. Okay, Kashish changed her answer. All right. Rakesh B, Shayan B. Let's see. What is the primary task of a startup? Execute a well-established business model. अगर आप well-established business model डाल रहे हो, तो what's the need of a startup then? Does not make sense. Sampath, ये को दिस इज आई अंडरस्टैंड. मैं संपत को जबरदस्ती इस सेशन में लेकर आई हूँ. ही इज लाइक प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2023. बट देन संपत, दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन, जो कहीं ना कहीं आपको आपके जीटीपीआई राउंड्स में पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो इट्स बेटर एंड गुड टू लर्न दिस. एंड ऑफ कोर्स एमबीए में तो मैं खुद ही पढ़ रही हूँ अभी ये चीज, तो इट इज अ टॉपिक फॉर मी, एंड दैट्स व्हाई दीज क्वेश्चंस आर यूनिक. सम ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच यू फाइंड यूनिक इज बिकॉज आई एम having the access to a database which is not accessible to the general public. So that is why I am able to do this. Okay, so take the benefit of that. Write an elaborated business plan. Only writing a business plan is not a primary task, guys. What are you saying? Option C, search for a scalable, repeatable and profitable business model. I know why you guys eliminated this option, because of the word search, and you are like, startup to innovation hota hai ma'am. Hota hai, that's right, but then you have to see, so many ideas come in our mind. We have to search and filter out that one single idea which we think can be scaled on a bigger level, can be repeated regularly. मतलब ऐसा कुछ मैं ना बनाऊं जो आज बना दिया और कल ना बने, ऐसा कुछ नहीं बनाना है मुझे. कुछ ऐसा बनाना है, कुछ ऐसा बेचना है जो मैं आज जिस तरह से बना पा रही हूँ कल भी वैसे ही बना पाऊं. Alright, keeping that in mind, a startup has to be scalable, it has to be repeatable, so that if a customer likes it, you are able to produce it for more number of times. Okay, I'll tell you Suraj. And then coming to profitable, of course a business model has to be profitable. So understand this. Na Suraj, no, this is half of your answer, where you are only writing a elaborated business plan. बिजनेस प्लान तो आप मुझे अभी बोलो, मैं अभी लिख दूंगी. तो क्या ये टास्क प्राइमरी है एक स्टार्टअप के लिए कि आप सिर्फ एक बिजनेस प्लान लिखकर छोड़ दो? नहीं, दिस इज हाफ ऑफ द आंसर. द फुल आंसर लाइज हियर कि आपका बिजनेस प्लान स्केलेबल होना चाहिए, रिपीटेबल होना चाहिए एंड प्रॉफिटेबल होना चाहिए. और एक बिल्कुल लेमैन की लैंग्वेज में बोलना चाहूंगी. इमेजिन यू आर समवन who does not understand anything regarding innovation, does not understand anything about entrepreneurship. उस बंदे को इस क्वेश्चन का आंसर कैसे पता होगा, कैसे वो दे पाएगा सही आंसर? द सिंपल रीजन और द सिंपल आंसर वुड बी द एडजेक्टिव्स और द टर्म्स यूज्ड ओवर हियर. एक डेफिनेशन को पूरा बनाता है. आपका चीज, आपका प्रोडक्ट स्केलेबल हो,
repeatable हो and profitable हो, that makes sense. Okay. Yes, Kashish, first we'll search if it's practical or not, and then we'll write a business plan. I love this definition as well. Very nice version, Kashish. So we'll first check कि जो हम elaborated business plan लिख रहे हैं वो सचमुच काम का है भी या नहीं. So that's also one point to explain that. Other can be in a very layman language. I also do this in para summaries, guys. Sorry for taking you from innovation entrepreneurship to verbal, but para summary का भी एक बहुत बड़ा trick है. In para summaries, in questions of para summary, you will find that every option looks the correct summary, but only one is the correct answer. The reason is all of them have bits and parts of the right answer, but the correct answer will have all the bits arranged. So here also we have all the bits arranged. So keep that in mind. Okay सूरज, पहले आप पता लगाओगे कि कौन सा बिजनेस अच्छा है और फिर आप उसके बारे में प्लान लिखोगे. Make sense? Okay, let's move to the third question, everyone. Quickly please. We still need to have some time. Shivam, para jumbles. Go and watch some of my basic videos on para jumbles, Shivam. You guys can check out the QRS. I think you guys are not aware of the QRS. Just a second. I'll just quickly share the link with you people. QRS में आपको क्या करना है? Just go and search for para jumbles. Okay. Just go and search for para jumbles. Like Control F कीजिए और para jumbles कर दीजिए. Okay. So if you do that, you would find that करना क्या है आपको, मतलब बेसिक्स वीडियो मैंने बनाए हैं, मतलब बिल्कुल जो जिससे बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता उन्हें भी समझ में आ जाएगा, उस टाइप के वीडियो. प्रैक्टिस सेट्स भी हैं उसमें जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो यू कैन मेक यूज ऑफ दैट. ओके, बाय. थैंक्स फॉर द कंफर्मेशन सूरज. सूरज हैज कम अप विद द आंसर गाइस. व्हाट अबाउट अदर्स? एंड अ क्विक नोट, जिन्होंने अभी तक सेशन लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए. आपके लाइक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा. शौनक, ओके गाइज देखो, शौनक इज द फर्स्ट पर्सन हु हैज गिवन अ मल्टीपल आंसर. देयर आर 2 करेक्ट आंसर्स गाइज. अच्छे से पढ़िए, क्या कर रहे हो आप? आई हैव रिटन इट क्लियरली. देयर आर 2 करेक्ट आंसर्स. रीड द फुल क्वेश्चन एंड डिसाइड द आंसर. ओके, Kashish has also given me 2 answers. Akash also. Zishan, good evening. Welcome to the session. Shivu, good evening. Welcome to the session, Shivu. Thanks for the answer. Okay, Shubham, Komal, Zishan, okay, Ishwara, Sumit. Good job. All right, we'll quickly come up to the answer then. What is a business model canvas? देखो, मैं correct answer तो explain करूंगी, but पहले एक बहुत stupid सा way बताऊंगी, so that in exam, if you come across something which is difficult for you to understand, let's catch it out through this process. And जिनके भी answers गलत हो रहे हैं, please take it up as a good thing because you are learning something from this session. All right. Hi Muskan, good evening. Welcome to the session. All right. So talking about a business model canvas. देखिए, आज तक हम business model के बारे में तो बात करते आए थे, but ये canvas term new है. तो general language में canvas क्या होता है? जहाँ आप drawings करते हो, correct? कैनवस क्या होता है? जहां आप ड्राइंग्स करते हो. सो टेक इट अप टू ऑप्शन डी. ऑप्शन डी विल डेफिनेटली बी योर आंसर बिकॉज इट्स अ डायग्राम विच डेपिक्ट्स द स्टार्टअप, हाउ द स्टार्टअप विल क्रिएट वैल्यू फॉर बोथ द स्टेक होल्डर्स एंड द क्लाइंट्स. मेक सेंस? नाउ गोइंग अप अ लिटिल, अ 5-year फाइनेंशियल फोरकास्ट. नो डियर नो. जब भी आपको ऐसे कुछ नंबर्स दे दिया जाए ना, प्लीज इग्नोर इट. ओके, दैट्स नॉट करेक्ट. नाउ कमिंग टू A, B, a framework to summarize the startup hypothesis or a short version of business plan. नहीं, business model canvas है तो वो depict करेगा, describe करेगा डिटेल में, short version नहीं होगा. So I will go with option B and option D. A framework to summarize. देखो, summarize word is very important for business model and canvas word के साथ हम connect करेंगे diagram को. So these are the 2 words which will help you to get the 2 correct answers of this question. Now don't ask me that CMAT में क्या multiple answers भी आएंगे मैम. नहीं, इस question के multiple answers थे,
तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. ओके fine, let's move forward to the fourth question फटाक से, and I will only wait for 10 seconds for you people. Okay, the ones who have joined in right now, namaskaram. We will continue with the fourth question now, so please give the answer. Traditional startup. Guys, traditional startup. Okay, Sampachayan, Suraj, Kashish, Zishan. 5 seconds more. Come on guys, use my trick. राकेश कहाँ है? राकेश, what's my राकेश ने तो इस बार हमारी ट्रिक यूज ही नहीं की. राकेश, come on. How to write a business plan for a traditional startup? If it's a traditional startup, not a new kind of startup, what would you do? You would do all the things. You will mention the size, you will mention the problem and the solution, you will mention a 4 years forecast for the income, profit and cash inflow. That means you are doing all of the above. Nahi, Rakesh, now you have changed the answer. I don't accept it. Okay, so I agree. I am going to explain that. Why 4 years? This striked me also because I did not know that exactly 4 years का plan रखते हैं या 5 years का plan रखते हैं. ठीक है? Now, just like Shaunak and others, I am also confused. Let's say I am in a confusion state of mind. मुझे 4 years सही नहीं लग रहा. At the same time, I know there is only one correct answer of the question. So I can't even say that A and C, A and B is the answer. Right? At this point of time, you decide, take a very student like approach. कोई महान approach लेने नहीं बोल रही हूँ मैं. Take a student like approach जो हम लोग सब करते हैं अपने exams में, multiple choice questions में. आपको पता है कि A and B correct है. आप सिर्फ C को लेकर doubt में हो. So in that scenario, can you select any one answer out of A or B? If no, then you know that C, I mean all of the above is the answer. That means C also has to be included in the answer. A very basic approach I am saying this. ऐसा कोई टीचर नहीं बोलेगा क्योंकि टीचर्स लोगों को लगता है ना कि टीचर्स आर ऑलवेज राइट, हमें सिर्फ करेक्ट आंसर एक्सप्लेन करना चाहिए. बट मेरी ये मेथोडोलॉजी नहीं है. I will tell you what to do when you are confused between the options. So that's what I am saying कि चलो if you are not sure with D, yes, hypothetical situation लेकर चलेंगे हम. Exactly, Shivam. When you are not confused, I mean you are not sure with C, you are confused with C, take up a choice between A and B. जैसे ही मैं A and B को देख रही हूँ, I can realize it clearly कि भाई दोनों is the correct answer. चाहे traditional startup हो या एक new conventional startup हो, दोनों में प्रॉब्लम सोल्यूशन लिखना एंड अपॉर्चुनिटी, साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी लिखना बहुत जरूरी होता है. सो देयरफॉर वी विल गो विथ ऑल ऑफ दीज. गेटिंग माय पॉइंट? ओके, सो एज आई सेड, अ क्विक रेपिटेशन. अगर आपके आंसर सही नहीं लग रहे हैं, सो दिस इज द करेक्ट अपॉर्चुनिटी टू ऐड समथिंग न्यू टू योर नॉलेज बैंक, एंड दैट्स द रीजन यू आर हियर. अदरवाइज आप खुद अब पीडीएफ से पढ़ सकते हो. व्हाई आर यू वाचिंग दीज वीडियोज, राइट? Okay, coming forward to question number 5, guys. Let's be quickly active on this. What are the lessons learned from observing startup failures and successes? What lessons are learned? What lessons are learned? Shaunak. Only one lesson is learned by Shaunak. Okay. Rakesh, Sumit. Forecasting startup income, profits and cash flow is in vain. Rim Jim, welcome to the session. Okay. C, D. Business plans really survive the first consumer contact. क्या ये आपका फेलियर से लर्न करने वाला एक लेसन नहीं है? Shivam, Buddhaditya, Akash, Shivu, Ishwara, Parth. Hi Parth, good evening, welcome to the session. Guys who are joining in, please like the session if you haven't done yet. Okay, quick, everyone. So, suppose करो मैंने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, मेरे फर्स्ट कंज्यूमर कॉन्टैक्ट में मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो क्या ये एक लेसन नहीं है
कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा पहला कस्टमर ही आपका लॉयल फेथफुल कस्टमर हो. वन लेसन लर्नड. फोरकास्टिंग तो आप लोग बोल ही रहे हो. Startups are not smaller versions of big businesses. Please understand this. This is a very, very major lesson to learn. I'll tell you something what I learned recently, okay? And that is also a learning for my part. So I'll just share that with you people. Big businesses and startups are not the same thing. Meaning, अगर आप startups की बात करते हो तो स्टार्टअप्स रिस्क लेने के लिए बहुत रेडी है. आई थिंक आई डिस्कस्ड इट इन वन ऑफ माय सेशंस अर्लियर दैट स्टार्टअप्स रिस्क लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, क्योंकि उनका क्या है, मैं आज 100 का दाव लगाऊंगा तो आइदर आई विल फॉल ऑन 0 और आई विल गो टू 500. ओके, ऐसा उनका केस है. ठीक है. एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ 0. क्यों? क्योंकि 1 साल हुआ है कंपनी स्टार्ट करके, बंद भी हो जाएगी तो कोई याद भी नहीं रखेगा. लेकिन कल को अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा या ऐसी कोई भी बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा कोई गैम्बल करते हैं तो उनके बंद होने पर सिर्फ उनको नहीं, उनके इतने सारे स्टेक होल्डर्स को फर्क पड़ेगा. ऊपर से बदनामी होगी सो अलग. दे हैव अ what do we say reputation in the market. They can't play like this, they can't take bets like this, and so they work on a very matured level on a stable platform. They do take risks but make sure that it is forecasted enough and like taken into consideration. Of course, Dishan, they have a legacy to maintain and therefore they will never do it like that. So don't consider that all the startups are smaller versions of big businesses only. Of course, businesses are built as a startup only, but when they move up and grow to become a big business, उनकी पूरी strategy and playing सब कुछ change हो जाती है. So clear and cut, my answer is option D, which is all of these. Okay. Again, a quick check to your knowledge bank. मुझे पता है लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, कितने गलत आंसर्स आ रहे हैं आज. But that's the good thing. You're saving yourself from doing a blunder mistake in the exam. Congratulations. Here's the 6th question for all of you guys. We are already 10:23. Be fast, please. This is again related to lean startup key principles. तो जिन्होंने अच्छे से notes लिए थे पहले question के, वो मुझे बिल्कुल करेक्ट से आंसर बताएंगे. I need a full answer, guys. I need a full answer, not a half answer, and eliminate a option which you feel any one word or 2 words are not clearing the definition of lean startup. Agile, waterfall दोनों को ही ले लो. मतलब तब से लास्ट के 2 क्वेश्चंस all of these क्या आ गए, आप इस 6th क्वेश्चन को भी all of these में ले जा रहे हो. बिल्कुल नहीं, wrong answer. Look at this, it's so different. Waterfall development and agile development, what is the difference? Anyone who knows it? Anyone from IT background here? Okay, so let me give you a quick check about waterfall and agile. Okay, so I am taking up an example of a software product only. So पहले क्या होता था कि कस्टमर जो है, क्लाइंट जो है, वो आपको बता देता था कि मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दो जिसमें ये फीचर्स हो. ठीक है, तो उन्होंने 5 फीचर्स बताई और एक प्रोटोटाइप बोला कि चलिए आप इस तरह का कुछ बना दीजिएगा. डेवलपर्स और टेस्टर्स क्या करते थे कि वो लोग जैसा उन्होंने बोला है बिल्कुल सेम टू सेम बनाने की कोशिश करते थे. टेस्टर्स टेस्ट कर लेते थे और सब कुछ पूरा प्रोडक्ट फुल्ली रेडी हो जाता. ओनली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन योर प्रोडक्ट इज फुल्ली रेडी, देन दे रिलीज इट टू द क्लाइंट कि देख लो भाई आपको आप प्रोडक्ट सही लग रहा है या नहीं. बिल्कुल शायन, वेरी नाइस. यस. एंड when it comes to agile development, agile में क्या होता है that it is done in parts and bits. यानी कि अगर मुझे कस्टमर ने 5 फीचर्स ऐड करने के लिए बोले हैं, so after adding every feature I will pass that through QA. I'll show that to the client and I'll tell her or him that please see sir, do you want any more changes, because at this point of time change करना easy है. तो अगर चलते चलते भी क्लाइंट को कुछ चेंज करना है तो वो आराम से बोल सकता है और मैं आराम से इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ. तो इसलिए दिस इज अ सेकेंड फीचर. फिर QA जाएगा, फिर क्लाइंट देखेगा, ओके होगा, तब हम 3rd में जाएंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ओके,
So therefore both of them are very very different. ठीक है, don't get confused on that. अब आ जाओ, why will I eliminate option A? स्टील्थ मोड में लीन स्टार्टअप नहीं होता गाइस. क्वेश्चन नंबर 1 जिन्होंने अच्छे से पढ़ा था उन्हें अच्छे से याद होगा. स्टील्थ मोड में नहीं काम करता है लीन स्टार्टअप. वो अपना प्रोटोटाइप सबको दिखाता है. सो देयरफॉर बिजनेस मॉडल कैनवस बनाना, कस्टमर डेवलपमेंट करना कि आप कस्टमर को बिफोर हैंड प्रोडक्ट रिलीज करने से पहले दिखाओगे कि देखो ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे ट्रेलर होता है किसी भी मूवी का. All right, Shaunak, we have already done that in the first question. You need to watch the recording, okay? And then, yeah, agile development, so that we know कि जैसे जैसे changes आते हैं हम वैसे वैसे change करते चले जाते हैं. Hi Dipali, welcome to the session. Here's the 7th question for you people, guys. Go for it. I clearly mentioned it on my Telegram that आप लोग late join मत करना. I myself took 1 minute to do the setup. फिर भी people were late, so I'll not be repeating anything. You people will be watching the recording. वैसे भी छोटा सा session है ये. It would hardly take another 10 minutes for me to complete the session. So let's do it. Here in the lean startup, how do we approach the customer development activity? हमने अभी अभी डिस्कस किया कि हम कस्टमर को ट्रेलर दिखाएंगे. तो इस क्वेश्चन के इस हिंट के हेल्प से ट्राई टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. देयर इज ओनली वन करेक्ट आंसर. कशिश एंड जिशान, नाइस. राकेश, शुभम, गुड. आई विल वेट फॉर 5 seconds गाइस. शौनक, शिवम, get out. Okay, shine. All right. So let's start. Hire a professional sales team to get as many customers as possible and be profitable from day one. देखो ये does not make sense. इस वर्ड से ही बिल्कुल लग रहा है, समझ में आ रहा है कि ये तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता. गुड सुमित, दीपाली, ईश्वरा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. Okay, okay, I think there's something wrong here. This should come over here, hypothesis. Okay, so get out of the office and interview the potential customers. आप उनसे पूछिए कि आपको क्या इसमें better चाहिए, क्या चाहिए, क्या आपकी requirement है. पार्टनर्स से पूछिए. जैसे आप लोगों से पूछोगे कि आपको चाहिए क्या, that's the first step towards customer development. Okay, that's applicable to every entrepreneur and every businessman. Okay, question number 8 on your screen, guys. A quick check. Come on. A lean startup would react to invalidated hypothesis. अगर आपका hypothesis invalidate हो गया तो आप क्या करोगे? For example, मैंने एक माउस बनाया, लोगों को वो पसंद नहीं आया. मैंने पूरा माउस नहीं बनाया था, मैंने बस एक hypothesis बनाया था, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया था. वो लोगों को पसंद नहीं आया. So what will I do? I'll fire the CFO, I'll fire the CEO, I'll pivot to a new set of hypothesis, I'll ramp up the marketing and hire more professional sales. कि भाई जो भी प्रोडक्ट बना है, अब मैं अच्छे मार्केटिंग मैनेजर को दूंगी और वही गंदा घटिया प्रोडक्ट बेच दूंगी. Of course not. We will pivot to a new set. किन किन लोगों ने देख लिया है Pictures season 2? Pivot was a very important part of that season. थोड़ा बोरिंग था वो part 1 के comparison में. That's my review. But then yes, pivot is a very important term used in that. See, no, Sampath, perfect. So pivot to a new set of hypothesis is what is most logical way to do. Of course, it's so easy to understand. You will not fire people and you will not sell the same ganda product, right? Okay, perfect. इसलिए सही हुआ. Okay, Sampath, all right. Fine, we have the 9th question, everyone, on your screen. We have 3 more questions. So let's finish it up on time. What is the business model? पता नहीं कितने बार मैंने ये क्वेश्चन आपको different ways में घुमा फिरा के पूछा है. So I want the correct answer. Come on. Zishan with the first answer. But is the first answer the correct answer? Shivu, Akash, Shaunak, there is no option F. Komal, Kashish, Shivam, Ishwara, Shaunak. Okay. Sumit, Shubham. All right, Dipali,
All of the above. Describe the problem and the solution for an organization. Describe how an organization creates, delivers and captures value. Describe a forecast of income, profit and cash flow. आप सभी correct हैं. Very nice. D is the right answer. All of the above. Very, very good. Very, very nice. Okay, quickly moving to the 10th question. Here comes the tricky question for the day. अब आएगा मजा. So do it. Now this one needs your brains. Some brain cells will get killed in this process. So उन्हें शहीद कर दीजिए आज इस process में. What do you think is the correct sequence in customer development? और जो सेशन देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया, प्लीज लाइक कर दीजिए. लाइक PLS शॉर्ट फॉर्म में. ओके. कस्टमर क्रिएशन, कस्टमर डिस्कवरी, कंपनी बिल्डिंग, कस्टमर वैलिडेशन. पहले वर्ड से ही आंसर निकालना सुपर इजी है. Chaunak has changed his answer. Oh God, don't take it in real English कि कंपनी बिल्डिंग का मतलब होता है कंपनी बनाना. This is not company building, guys. Of course, Rishika, welcome to the session and thank you for the answer. सबसे पहले आप कस्टमर को डिस्कवर करोगे कि मेरा पोटेंशियल कस्टमर कहाँ हो सकता है. जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया था, अगर मैं वीडियो गेम्स बेचना चाहती हूँ तो मेरे पोटेंशियल कस्टमर्स की एज रेंज लेट्स से 5 इयर्स से लेकर 30 इयर्स तक होगी. बट आई डोंट फील दैट पीपल बियॉन्ड दिस एज डू प्ले अ लॉट, राइट? सो डिस्कवरी कम्स फर्स्ट. एंड जितने भी लोगों ने ये गलती की है ना, कम ऑन गाइज, इंग्लिश मीनिंग लेना है बट इतना लिटरल मीनिंग नहीं लेना है. व्हेन आई से कंपनी बिल्डिंग, आई मीन आई एम बिल्डिंग अप माई what should I say, assets. I'm building up my equity, I'm building up the reputation. Okay, market size and what they lie between, like toy between 1 or 6 years. Yes, Rishika, exactly. So you will first discover. Number 1, you will discover. Then number 2, you will validate कि मुझे लगता है कि इस जगह पर मुझे मेरे बहुत सारे कस्टमर्स मिल जाएंगे, लेकिन उसमें से कितने सचमुच मेरे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड है, ये है वैलिडेशन. सो दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, वैलिडेशन. आफ्टर दैट यू विल हैव टू डू क्रिएशन, यानी उन्हें फाइनली अपना बनाना है, आपको कस्टमर अपना बनाना है. सो दैट इज क्रिएशन, दैट इज ए. एंड लास्टली वी आर हैविंग द कंपनी बिल्डिंग. अब कंपनी बिल्डिंग मतलब कंपनी की बिल्डिंग बनाना नहीं, कंपनी बिल्डिंग यानी आप अपने रेपो बना रहे हो. ठीक है, you are making your repo over here, so that makes a difference. Understood everyone? Interesting, right? So the second last question is coming on your screen right now of a very similar type. Let's go. Hi Sushmita, good evening, welcome to the session. You're slightly late, but no problem. You can give up the answer of the 11th question and then the last question coming up, and you can watch the recording for the old questions. Buddhaditya, Suraj, Shaunak and Sumit Zishan. All right. Okay. So what is the agile development phase? मैंने थोड़ा बहुत agile आपको पिछले question में समझाया था, so I expect a right answer from everyone. Okay, so analysis and design, evaluation, planning, testing. Of course, we're gonna get started with planning. Evaluation at the last. Okay, is it so? Planning. We'll start with planning. हम plan करेंगे, फिर उस प्लानिंग के हिसाब से हम एनालाइज और डिजाइन करेंगे,
डिजाइन करने के बाद हम उसे टेस्ट करेंगे कि सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, एंड लास्टली हम उसे इवैल्यूएट करेंगे कि मेरा कॉस्ट इतना पड़ा था, मुझे रेवेन्यू इतना मिला है, मेरा इतना टाइम गया था, मुझे एफर्ट्स का रिजल्ट्स ऐसा मिला है. दिस इज ऑल इवैल्यूएशन. ओके, एंड प्रोडक्ट ठीक चल रहा है या नहीं, दैट इज टेस्टिंग. एंड सो the answer of this question is option D. I forgot to write the options here. This will be option D. Understood? Easy peasy. So आज startup के questions के लिए इतना ही काफी है. Last question is for you people. How was the session? So जल्दी जल्दी से फटाफट बता दें how was the session, and I'll give you a quick check about tomorrow. Tomorrow we have a lot of sessions on Unacademy. So let me quickly tell you about that. Just give me a quick second. I'll just open this up and tell you. थोड़े देर रुक जाओ and then I'll tell you about that. Okay, 1 minute. I'm just opening up the file. Don't have it right now here. Mixed review about a particular what college? How do I go about it? Can you just mention the name of the colleges in either messages or comments, Shaunak? That would help me, and also tell the criteria on which you are judging it. Okay, all right. So about tomorrow, tomorrow is 20th of March. My first class will be at 6 p.m. on Unacademy live. Okay, I mean YouTube live of Unacademy. 6 p.m. to 7 p.m. will be my session for general awareness, that is CMAT special GK. Then I'll have a special class on Unacademy's app, free of cost, of course. That would be a verbal master class for CMAT, and no other classes. Okay, so tomorrow 6 to 7 and 7:30 to 8:30 will be the two sessions. Yeah, Shivam, tomorrow evening we'll have a class. Zis Ranchi or SIMB Pune, Suraj Zis Ranchi. Okay. And thank you so much for your amazing comments. Thank you Rakesh, thank you Komal, thank you Sumit, fruitful. Thanks Kashish, thank you so much Shine. Alright, thank you everyone for coming in and joining the session. Anything recommended for grammar? Rishika, there are lots of materials on Telegram, and I would recommend you to go and practice every day 5 questions from each topic of grammar available there. There are plenty of materials. जाकर Telegram में एक बार, you will get the link in the description also. Just go and get the Mega Drive link there and you can access lots of materials. So रोज 5 questions 3-4 topics से grammar में solve कर लीजिए. It would be more than enough for you. And yeah, from somewhere would work, Rishika. All right, fine then. Thank you everyone for joining in. और जाने से पहले अगर आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें. हाय अभी, गुड इवनिंग, वेलकम टू दिस सेशन, बट वी आर ऑन अ बाय बाय सेशन राइट नाउ. सो अभी हम जा रहे हैं, बट हम लोग फिर वापस आएंगे कल 6 PM. ओके, so bye bye everyone, take care, good night, take very good care of yourself and do study hard. कोई भी questions हो, queries हो, make sure you mention it in the comment section. And अगर कोई personal data share करना है, then definitely you can ping me on, like DM me directly as well. Okay, thanks Shubham, thank you guys, bye bye, good night, take care. VRC sessions here in XAT. I can post means the same videos over here. No, that is a copyright issue, Baba. No. Okay, I'll definitely do some videos of verbal over here also, no problem. But आपको recommend ये करूँगी शौनक कि एक बार जो QRS जो मैंने अभी यहाँ पर पिन कर दिया है ना chat में, please go and refer that. Okay, there are plenty of verbal videos, like something which you won't be able to finish before CMAT also. Okay, so make sure you go and visit those videos. They will be more than enough for you. Okay, but sure, if possible, I'll take sessions on VARC also. Thank you. Good night everyone, take care, bye bye.